Let's begin with the phase diagram as we talked about this particular phase diagram क्यों ये ज़रूरी है और क्या समझना इसमें ज़रूरी है इसके बारे में। तो जैसे हमने एक रिमाइंडर के रूप में मैं बता दूं कि लास्ट टाइम जो हम लोग डिस्कस किए थे दैट डिस्कशन इज लीडिंग टूवर्ड्स and this particular section is very important to understand at the beginning of the material when it transforming from one phase to another, means the one solid is defining by the heating into a liquid, and then liquid is solidified into a solid. So what is happening during that period at that particular system is related to the phase diagram, phase, and that the particular understanding is leading to this chapter is the phase diagram. तो बेसिकली क्या है फेज डायग्राम। जब हम किसी मटेरियल को बनाते हैं तो बनाते समय मटेरियल के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं और उन बदलावों से उसके माइक्रोस्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ता है और उस माइक्रोस्ट्रक्चर के असर से उसकी प्रॉपर्टी में क्या असर पड़ता है, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए फेज डायग्राम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात कि ये फेज डायग्राम बेसिकली किन पॉइंट्स को बताता है। फेज डायग्राम बेसिकली क्या बताता है, दैट प्रिडिक्ट द फेज चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन एन अलॉय दैट हैज बीन एक्सपोज्ड टू अ पर्टिकुलर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस and it is often important to understand regarding the property of the material। तो ये बेसिकली हीट ट्रीटमेंट के बारे में फर्स्ट वो बता दिया कि जब हम हीट ट्रीट करते हैं मटेरियल को तो उसके अंदर क्या बदलाव आते हैं, उसके वजह से क्या चेंजेस आते हैं। तो जो बेसिकली फेज डायग्राम है किसी भी अलॉय सिस्टम का, उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है माइक्रोस्ट्रक्चर से और मैकेनिकल प्रॉपर्टी से किसी भी अलॉय या मटेरियल का। एंड दैट्स व्हाई वी आर वेरी कंसर्न अबाउट दिस चैप्टर एज वेल and this particular phase diagram because it is totally related to the property of the material and well the structure of the material as well। जो एक तरह से ढांचे की अभी तक हम लोगों ने बातें की, जो हम लोगों ने समझा कि ये प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को ऐसे टेस्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टी वैसे बनती, तो ये प्रॉपर्टी बनती कैसे है और इसके बनने का क्रम क्या है, ठीक है, किस तरह से बनेगा, उसको बनने का ये जो फेज है ये बेसिकली हम लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो दिस पर्टिकुलर डायग्राम प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द मेल्टिंग, कास्टिंग, crystallization and another phenomena। So what I told you, the melting process, so melting is related to the casting process, means it is a very beginning of the making of any material। So that is the melting। melting means पिघला देना, ठीक है, पिघलाना। Then we have another casting। so casting is nothing, just another part of the melting process to give a shape and size to particular material in a specific regions, ठीक है। so and then the crystallization and the recrystallization, the crystallization and recrystallization basically। So these all are related to this particular phase diagram। These all are related to particular phase diagram। This phase diagram basically is showing the relation between all these things, that by when we are melting a metal, जब हम किसी मेटल को मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद किसी सांचे के अंदर उसको ढालते हैं, जैसा कि आपने वर्कशॉप में अपने परफॉर्म किया होगा, जब आप कास्टिंग करने गए होंगे तो उसको भट्टी में रख के लोहे को पिघलाया गया होगा, पिघलाने के बाद लैडल की मदद से सांचे के अंदर जो मोल्ड बनाया था उस मोल्ड के अंदर उसको कास्ट किया, डाला होगा, तो दैट इज कॉल्ड द कास्टिंग। और जो फर्नेस के ऊपर हम गर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग। तो उस मेल्टिंग के दौरान हो क्या रहा है, हम एक फेज से जो एक सॉलिड फेज है मटेरियल का उसको हम कर रहे हैं गर्म, तो वो क्या होगा, एक सॉलिड से सेमी सॉलिड फॉर्म में गया
और जब उसका प्योर मेल्टिंग टेम्परेचर पहुंचा तो वो मटेरियल क्या हो गया, वो टोटली मेल्ट हो गया, लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो गया। ये तो एक फेज रहा प्रोसेस का। फिर दूसरा प्रोसेस हमने उसी को क्या रिवर्ट मोड किया, दैट इज द हीटिंग एंड देन वी आर कूलिंग। मीन्स इन द मेल्टिंग वी आर हीटिंग एंड इन द कूलिंग वी आर, इन द कास्टिंग वी आर कूलिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग इन द कास्टिंग, कास्टिंग में हम क्या करते हैं, मोल्ड बनाते हैं और मोल्ड के अंदर इस पर्टिकुलर लिक्विड मेटल को पोर करते हैं लाइक दिस। अगर ये आपका मोल्ड है, ये इसके अंदर ये सांचा बना है, तो इसके अंदर हम लिक्विड मेटल को पोर करेंगे। तो जब लिक्विड फॉर्म होगा तभी तो ये आराम से इजीली सेटल हो पाएगा और इस शेप को ले पाएगा, तभी तो हमें एक सॉलिड मटेरियल मिलेगा एक शेप का, राइट। तो ये सॉलिड मटेरियल बनने के दौरान 3 फेजेस का परफॉर्मेंस हुआ। एक तो प्योर मटेरियल जो सॉलिड फॉर्म में था उसको हमने गर्म करके लिक्विड बनाया, फिर लिक्विड मटेरियल को हमने पोर किया एक सांचे के अंदर और उसको किया कूल, उसको किया कूल, दैट वी आर चेंजिंग दैट पर्टिकुलर लिक्विड टू सॉलिड। लेकिन सॉलिड बनने का जो क्रम रहा वो लिक्विड प्लस सॉलिड के कॉम्बिनेशन से बना, मींस सेमी सॉलिड फॉर्म से बना, और वो सेमी सॉलिड फॉर्म एक हमें सॉलिड फॉर्म को परफॉर्म किया। तो दैट द काइंड ऑफ 3 phases दैट बेसिकली अकरिंग इन द पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ द मटेरियल। और यू कैन से जब हम किसी मटेरियल को डेवलप करते हैं या बनाते हैं तो इनके अंदर 3 तरह के बेसिक फेजेस चेंजेस आते हैं, एक तो सॉलिड, एक सॉलिड प्लस लिक्विड एंड थर्ड वन इज द प्योर सॉलिड फॉर्म। और उसी को जब हम रिवर्ट करते हैं तो एक सॉलिड, फिर लिक्विड प्लस सॉलिड एंड देन प्योर सॉलिड लिक्विड, and then again the same vice versa process is going on, so that the particular, that is the liquid, that particular liquid plus solid and that is the pure solid। तो एक तरफ से हमने इसको गर्म किया, मेल्टिंग टेम्परेचर पे आया, वो कूल हो गया, ठंडा हो गया, मेल्ट हो गया। फिर दूसरे तरफ से हमने उसको ठंडा किया तो वो क्या हो गया, लिक्विड पोजीशन से, लिक्विड पोर्शन से क्या हुआ पर्टिकुलरली, फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में आया, फिर वो प्योर सॉलिड फॉर्म में आया, तो हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल गया जो हमको प्रोडक्ट बनाना है। अब इसी प्रोडक्ट की उपयोगिता को समझ के हम इन तीनों फेज को अंडरस्टैंड करते हैं और इसी प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी को बेहतर करने के लिए बेसिकली, ठीक है, हम इन 3 फेज की अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं और इन्हीं 3 फेज के अंडरस्टैंडिंग को समझने के क्रम में हम फेज डायग्राम को समझने का काम करेंगे और कर रहे हैं। दैट द थिंग एंड व्हाई वी आर डूइंग, जस्ट टू क्रिएट अ वेरी गुड material, very efficient property material that will help to create various component which will work efficiently at its you can say in service position or you can say the working environment। तो ये बेसिकली जो पर्टिकुलर मटेरियल्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को करना हमें बहुत ज़रूरी है कि मटेरियल बन कैसे रहा है, उसके बनने का क्रम क्या है। So basically this phase diagram is all about to related to these things, that how we are creating this material। So अगर हम इसी में प्योर मटेरियल की बात करें तो एक प्योर मटेरियल सिंगल फॉर्म को डिफाइन करेगा, लेकिन अगर हम 2 मटेरियल को बात करें, दैट मीन्स द बाइनरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो उनके मिलने का क्रम क्या होगा। भाई हमने यहाँ पे सिंगल मटेरियल के बारे में बता दिया कि एक सॉलिड सिंगल ले लिया हमने, उसका एक सिंगल मेल्टिंग टेम्परेचर है, उसको हमने धीरे धीरे गर्म किया, वो प्योर लिक्विड हो गया, फिर उसको धीरे धीरे सॉलिड फ्रीज किया, ठंडा किया, कूल किया, तो वो एक तरीके से सॉलिड में तब्दील हो गया। लेकिन अब हम बेसिकली अगर हम मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में एफिलेटेड है या कंसर्न है तो मटेरियल की प्रॉपर्टी, भाई एक सिंगल मटेरियल मटेरियल है तो उस सिंगल मटेरियल का एक सिंगल प्रॉपर्टी होगा, लेकिन अगर 2 मटेरियल को हम कंबाइन कर देंगे बेसिकली तो क्या होगा, एक सिंगल मटेरियल के अंदर दूसरे मटेरियल की भी प्रॉपर्टी आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो दूसरा सॉलिड मटेरियल है उसके मेल्टिंग टेम्परेचर का डिफरेंस पहले सॉलिड मटेरियल के मेल्टिंग टेम्परेचर से अंतर है। तो अब करेंगे क्या,
भाई दोनों के एक ही मेल्टिंग टेम्परेचर पे हमें पहुंचाना होगा, तभी तो इनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन पाएगा। एंड दैट द थिंग, द कॉम्बिनेशन, दैट द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन we are taking place to understand in this particular phase diagram, that how and at which phase that particular different materials are combining, or they performing, they transform themselves into a crystal material or the non-crystal materials. So this particular phase diagram is affiliated or related to the mechanical property of the material basically. तो इसको अंडरस्टैंड करने के हम मटेरियल के कंपोनेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और उसी में हम बात करते हैं कि अगर मटेरियल को हम मिला रहे हैं, ठीक है, अभी मैंने बोला कि दो मटेरियल के मिलाने की बात होती है, तो दो मटेरियल को मिलाते क्यों हैं, उसको मिलाने का कॉन्सेप्ट क्या है, तो उससे पहले हम एक चीज को जरा मेकअप कर लें। द टर्म इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम में एक ग्रीन कलर के बॉल से एक ब्लू कलर के बॉल से, दे आर इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, मीन्स दे हैव अ वेरी मिनिमम free energy in that, and when this free energy is disturbed, the entropy will start to play a very vital role in this particular system. And how it works and how it will happen, we will talk in detail. So before that proceeding, for understanding this particular this particular component and the phases. So what are the component means? The component is basically used, and you can say the pure metal or the compound of which an alloy is to compose, like your aluminum and the copper, like your copper and the zinc. So in this particular scenario, there are the two phases, the copper and the zinc, and this particular is called the sometimes the solute atom and the solvent atom. ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री अब आपकी उपयोग आने वाली है, उस केमिस्ट्री को रिकॉल करिए एंड देन टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन बेसिकली। सो दिस पर्टिकुलर component is nothing, just a kind of a compound or the element by which a particular material is to be made with a distinct mechanical properties. तो कंपोनेंट जिससे मिलके दूसरे मटेरियल कंबाइन होते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं, दैट द थिंग इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट एंड द पर्टिकुलर और उसके पर्टिकुलर मटेरियल बनने के जो फेजेस हैं, दैट द होमोजीनियस, फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल पोर्शन ऑफ द मटेरियल which given a chemical composition and a structure, that the alpha and the beta like this, that is the showing here. ठीक है, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने बहुत सारे अलायंस सिस्टम को और किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हमने उसको गर्म किया, पिघलाया और उसको समझने की कोशिश की। तो कभी कभी क्या होता है कि समटाइम इट मे बी पॉसिबल देयर इज द maximum solubility of the particular concentration of the particular material. Wait a minute, let me. So to understanding this particular phase equilibrium diagram, first we considering the solubility limit, and that particular solubility is nothing. So there is a maximum concentration of the solute atom that may dissolve in the solvent to form a solid solution, and that particular limitation of the mixing the solute in the solvent is called the particular solubility limit. So
the addition of this particular solute in excess of this particular solubility limit result in the formation of another kind of solid solution or the compound that have a distinct different compositions as well. So understanding this, we are just considering this particular diagram of particularly liquid and the solid solution. That means the sugar and the water solution. So this the particular thing that we discussing earlier as well. तो बेसिकली क्या है कि एक शुगर और पर्टिकुलर लिक्विड के वाटर के सोल्यूशन को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो अंडरस्टैंड करने के लिए कि मटेरियल की जो भी बनावट होती है बेसिकली उसका मटेरियल को किस तरह से हम एक दूसरे मटेरियल के साथ कंबाइन करके लाइक दिस एक एक मटेरियल के कंपोनेंट को दूसरे मटेरियल के कंपोनेंट के साथ किस तरह से हम एडजस्ट करें, तो वो जो पर्टिकुलर सॉलिबिलिटी है वो यहाँ से ये पर्टिकुलर फिगर जो आपको दिख रहा है, इस पर्टिकुलर फिगर से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब वो पर्टिकुलर मटेरियल के माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट ऐड होंगे तो वो किस तरह से एटम कंबाइन होके एक सॉलिड मटेरियल को बनाएंगे। तो ये कुछ जो सॉलिबिलिटी लिमिट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं शुगर और वाटर के कॉन्सेंट्रेशन से, सिरप को अंडरस्टैंड करने के कॉन्सेंट्रेशन से। तो ये बेसिकली नथिंग जस्ट टू अंडरस्टैंडिंग दिस by this particular solubility limit, as you can see यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्राफ बना हुआ है जिसमें एक पानी और शुगर के सोल्यूशन को सिरप को दिखाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जब पानी और शुगर को मिलाते हैं तो जो शुगर है जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर बेसिकली डिसॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, कुछ हद तक डिसॉल्व हो रहा है लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक सर्टेन टेम्परेचर पे ऐसा आया कि उसका जो मैक्सिमम सॉलिबिलिटी है पर्टिकुलरली वो शुगर का वो पानी के अंदर मिलना बंद हो गया। तो दैट द पर्टिकुलर पोजीशन इज बेसिकली नोन एज द मैक्सिमम सॉलिबिलिटी लिमिट। और ये सॉलिबिलिटी लिमिट जो डिपेंडेंट होता है वो सॉल्वेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। तो अगर सॉल्वेंट के टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर दें तो इट मे बी अ चांसेस that the particular material will start again the adding the solute atom, and that the particular called the non-equilibrium phase, that the particular system is called the entropy, that when the material are in the equilibrium state, means the liquid and sugar solution are, as you can see that the particular liquid is in the equilibrium state, what we are doing, we are disturbing, we are providing a kind of a disturbance by increasing the temperature. So by the introducing of this particular disturbance or the change in the entropy, it what it did, what it does, it increases the solubility limit of that particular material up to a certain level. So by this we can increase the adding of the another solute atom in the solvent, and that is how we can improve the property of the material, the base material property, by adding a different kind of a component into that particular material, like we are combining the copper and zinc. So what is happening, we are improving the increasing the combination of the zinc in that. So if we are taking the example of the iron and carbon system, and that the particular iron carbon system, in the pure iron we are adding the carbon. So that as I told you in the earlier class as well, if we increase the particular carbon percentage, the more the carbon percent, the more the particular material will get the harder, and that particular, if it exceeded to the 2%, it particular still changes its tendency into a cast iron. So that we will discuss in the later, but just to understand what is the solubility limit, so it is nothing, it is just the maximum concentration for which only a single phase solution is solid, the solution is exists. So that the particular solubility limit is to be identified. So as you can see in this particular sugar and water solution, the solution become more concentrated until it reaches to the solubility limit, and when it reaches, or this particular solution becomes saturated with the particular sugar, तो जब सैचुरेटेड हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो लिक्विड सिरप है उसके अंदर वो जो सॉलिड पार्टिकल लिक्विड शुगर का वो नीचे नीचे उसके तली में बैठ जाएगा। सपोज हम एक कंटेनर के अंदर उस पर्टिकुलर लिक्विड और शुगर के सिरप को मिला रहे हैं, ठीक है,
लेकिन क्या हुआ, जब मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हो गया, वो अपनी सॉल्युबिलिटी लिमिट को पहुंच गया, तो दो फेजेस क्रिएट हो गए। एक फेज तो क्रिएट हुआ शुगर सिरप का, लिक्विड सिरप का, और दूसरा हुआ प्योर शुगर का, जो कि उसके अंदर मिल नहीं पा रहा है। अब हमें क्या है कि इसके और मिठास को बढ़ाना है, मीन उस पर्टिकुलर पानी के जो क्या बोलते हैं, जो सोल्यूशन है बेसिकली, उसके कॉन्सेंट्रेशन को हमें बढ़ाना है। किसके रिस्पेक्ट में? चीनी के रिस्पेक्ट में। तो उससे होगा क्या कि उसके अंदर और मिठास आएगी, मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय एडिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ अ मटेरियल, एंड दैट इज how we will add that. So that is basically जो कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी मटेरियल के मिलने का जो कॉम्बिनेशन है, उसकी इंटरनल एनर्जी, जो फ्री एनर्जी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, जब रैंडमनेस इंक्रीज होगी, तो वो जगह बनाएगा दूसरे मटेरियल को एड अप होने के लिए, एंड दैट इज हाउ we can add up the material in the particular material and increase the property of the particular material. So for understanding this particular solubility limit of sugar in water depend on the temperature, so that the water and maybe represent that you can see in the graphically the temperature along the ordinate and the composition along the abscissa in the weight percentage of the sugar, as you can see in this particular figure. So along the composition axis, the increased sugar concentration is formed, that is the left to right, that particular composition left to right, and that particular involving the percentage of the water reading from the right to the left, that the particular combination is showing. So left to right is showing the concentration of the sugar, and right to left is showing the concentration of the particular water. So by understanding this graph, now we are moving to the particular, since there is only two components are involved, sugar and water, the sum of the concentration at the composition will equal to the 100 weight percentage. So the solubility limit basically representing the by this particular vertical line, you can see here this in the figure. So for composition and the temperature, to the left of the solubility line, there is only a syrup liquid solution exists, and to the right of the line, the syrup and the solid sugar coexist. When the solubility limit at that particular temperature is the composition that correspond to the intersection of the given temperature coordinate at the solubility limit of the particular. So for example, if we are at the 20 degree, the maximum solubility of the sugar water is, you can see that is already extracted, that at 20 degree centigrade, what are the combination of that particular sugar and water, that particular 20 degree, that composition is showing basically the concentration of the solubility limit increasing, and with the rising the temperature as well. So for understanding this particular solubility limit, we can now understand how this particular solubility limit is playing a very vital role to understand the concentration of the material as well. So now we are moving toward the particular, we will take this particular figure as an example to understand the basically, the first we understand the solubility limit, what is the solubility limit, then we will understand the phase, and then we will understand the phase equilibrium with respect to that, and then we will move toward the particular detailing the binary isomorphous system and so on. So now we are understanding the phase. We understand the solubility limit, that maximum concentration, and then now we are understanding the phase. So it is very critical to understanding this particular phase diagram, the concept of the phase, basically what is all about the phase means. So the phase, that is the homogeneous portion of a system that have a uniform physical and chemical characteristic. So the every pure material that is considered to be a phase, so also every the solid, liquid and the gaseous solution as well. So for understanding this particular phase, we are again considering this particular figure with the sugar water syrup solution, and the understanding that one phase and the solid sugar is the another phase.
So one phase is what the sugar solid syrup is basically sugar water syrup is the single another phase, and this particular solid sugar is another phase, and each has the different physical properties. One is the liquid and another is the solid, and further one is virtually pure sugar, and the other is the combination of the water and the liquid, you can say the sugar. Okay, तो एक जो है इस पर्टिकुलर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो एक तो पर्टिकुलर लिक्विड सॉलिड सिरप का है और दूसरा क्या है एक प्योर सॉलिड है, ठीक है। तो दोनों क्या है, दे आर बेसिकली having a distinct properties at the boundary which is separating the phases, and across there will be a discontinuity and abrupt changes in the particular physical and the chemical characteristic as well. So you can see here there are the two phases are present in a system. That is not necessary there be a difference in the both the chemical and the physical properties, or you can say one or the other set of the property is sufficient to match the particular combination of the two material, or the you can say. So the when as we can take the example the water and the ice, they are present in the container. The two separate phases exist and they are basically you can say they are physically dissimilar. One is solid, the ice cube is solid and the water is the liquid, but they are identical in the chemical makeup. So when the substance can exist in the two or more polymorphic form having the both FCC and the BCC structure, so these structure is separate phases and because their respective physical characteristics are different. So sometimes the single phase system is termed as the homogeneous system, which are composed of the two or more phases termed as the mixture or the heterogeneous system as well. So we will discuss this particular heterogeneous, the homogeneous system. But we are talking about the most metallic alloy for the matter, ceramic, polymeric and the composite system. They are the heterogeneous and the phases that interact in such a way, the property combination, the multi-phase system and the more attractive the individual phases are basically related to that. So now you can understand how this particular phase is all about to mean that one chemically same but physically different materials are in the combination in the particular container, means ये जो liquid और solid liquid और sugar का syrup है वो liquid form में है, they are chemically combined with this particular sugar but they are different in the physical appearance because ये particular sugar के जो particle है वो solid form में है और ये liquid और sugar का जो syrup है वो liquid form में है। तो जो फॉर्म का जो फेज है बेसिकली वो डिफरेंट है बट केमिकल मेकअप तो दोनों का वो सेम है, एंड दैट इज हाउ we are combining the materials, different materials and improving the property of the particular materials. And this particular figure is also explaining the particular equilibrium system. So as I told you, the equilibrium is the another essential point that is describing in term of thermodynamic quantity, that is called the free energy. And this particular free energy is nothing just a function of internal energy of a system, that the internal energy that combining these particular atoms, and when the randomness of this particular is happening, the movement of the particular material start behaving. And a system that is called the equilibrium, if its free energy is a minimum under some specified combination of the temperature, pressure and the composition. And why when it is not in the equilibrium, so we take again the example of this particular system कि क्या है कि ये जो लिक्विड और सिरप का जो लिक्विड और वाटर का सॉरी शुगर का जो सोल्यूशन है वो बेसिकली अभी क्या है प्योर कॉन्सेंट्रेशन में है, अब इसमें मैक्सिमम शुगर को मिला नहीं सकते, लेकिन क्या है कि ये पर्टिकुलर जो सोल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम फेज में है, दोनों बराबर मात्रा में मिले हुए हैं, लेकिन तीसरा दूसरा कंपोनेंट है सॉलिड फेज में, उसको हमें मिलाना है। तो क्या करेंगे हम इसके इक्विलिब्रियम स्टेट को करेंगे चेंज, और वो चेंज कैसे होगा जब इसकी फ्री एनर्जी में डिस्टर्बेंस आएगा, जो इंटरनल एनर्जी है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, और वो डिस्टर्बेंस आएगा कैसे जब हम इसकी इंटरनल एनर्जी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। एंड व्हेन वी इंक्रीजिंग द सडन टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिरप,
what will happen? The pure energy of that particular free energy of that system is disturbed, and the concentration of this particular liquid, solid sugar is start dissolving again in this particular syrup as well, and creating the more you can say the sweetest syrup when we increase the temperature of the particular the liquid solution of this particular syrup. And this particular phase equilibrium is understanding the reflection of this particular characteristic of a system, and that is how we can understand this particular by understanding this particular liquid and the sugar syrup example. So understanding this particular, again we सपोज कीजिए कि हम एक क्लोज वेसल के अंदर इस सोल्यूशन को हमने रख लिया, और जो सोल्यूशन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज शोइंग द 60 and 65%। तो 65% जो सिरप है वो कंबाइन किसको कर रहा है, शुगर और वाटर को। ये तो हमें पता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना है, एंड द अमाउंट ऑफ द पर्टिकुलर कंपोजिशन द पर्टिकुलर अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितना इसको पर्टिकुलर सिरप और सॉलिड शुगर को विद रिस्पेक्ट टू द टाइम हम इसको मैनेज और कर सकते हैं। तो कैसे होगा, अगर हम सडनली इसके टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम और बैलेंस जो स्टेट है वो टेम्परेली क्या होगा, अपसेट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा in the particular solubility limit, and that particular increases the solubility of that particular solid sugar up to 88%, and the sugar the solid sugar will go into the solution in the syrup, and this will continue until the new equilibrium syrup concentration is stabilized at a higher temperature। अभी लोअर टेम्परेचर पे उसकी solubility limit अलग थी, लेकिन हमने क्या किया, उसके टेम्परेचर को बेसिकली बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर को जब बढ़ा दिया तो उसके अंदर जो सॉलिड मटेरियल था उसका मिलना घुलना ज़्यादा हो गया, लेकिन वो घुलना भी कहीं ना कहीं एक हद तक रुकेगा। तो जब वो रुकेगा तो वहाँ पे उसकी सॉल्युबिलिटी लिमिट बनेगी एट विच टेम्परेचर, एट अ हायर टेम्परेचर। तो इससे हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर पे कितना हम मटेरियल को दूसरे मटेरियल के अंदर मिला के उसकी प्रॉपर्टी को बेसिकली इन्हांस कर सकते हैं। So this particular sugar syrup example is showing the phase equilibrium using the liquid and the solid system, and so as the metallurgical system and the material system also interesting in this particular phase equilibrium involving the solid phases as well, and that the particular understanding of the state of the system is reflected in the characteristic of the microstructure as well, which is necessary, including not only the phase present and their composition, but addition in the relative phase amount as well, and the arrangement and the distribution of the particular system of that particular is system as well. So it is often, especially in the solid solution, to understand the state of the equilibrium is never completely achieved, because the rate of approach the equilibrium is extremely slow, so such that this particular system is known as the non-equilibrium or the meta-stable state. So this particular phase diagram basically represent nothing the relationship between the temperature and the composition and the quantity of the phases at equilibrium state. So this is the just understanding the how a material can combine at a various temperature and the composition at a phases, that creating a kind of a property inside the material as well. So this is all about the phase introduction of the material, and we will discuss another point in the next